Let us now go ahead and begin by section 13.5. And this section, this is about expansion by cofactors. बहुत ही easy है बेटा ये question. Expansions by cofactors. ठीक है. सो एक्सपेंशन बाय कोफैक्टर्स में सबसे पहले जो डेफिनेशन है जो आपको समझनी है कि whenever we have any n cross n matrix, what is happening to my pen? Whenever we have any n cross n matrix, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होता है, it is a sum of n factorial terms. Please give me a moment. Let me take out next other pen. Whenever we have n cross n matrix, its determinant is a sum of n factorial terms, right? And what you do is, in these n factorial terms, you will notice that there will be one element, ये हमने पहले भी बात की थी, from each row, and you will have one element from each column. One element from each row and one element of each column. तो in particular, अगर मुझे कभी भी किसी का determinant निकालना है, I can say it will be AI1 cofactor CI1 plus AI2 cofactor CI2 plus AIJ cofactor CIJ plus AIN cofactor CIN. ऐसे करके हम किसी भी मैट्रिक्स A के डिटरमिनेंट को लिख सकते हैं. दिस इज हाउ वी कैन राइट द डिटरमिनेंट. एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज आई हैव अ मैट्रिक्स A, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. And let's say you want to expand. You can expand around any. मतलब you can expand around row 1, row 2, row 3, column 1, column 2, column 3. चलिए, to help you understand, today I will expand through row 2. So अगर मैं यहाँ पे if I write A21, so I will skip second row and first column. So I will be left up with A2, A12, A13, A32, A33 का determinant. 2 plus 1 is 3, so it means I will have a minus 1 sign with it, right? So this into this, इस सिर्फ इतना निकालते हैं तो इसको हम बोलते हैं माइनर. और जब हम इस माइनर के साथ साइन लगा देते हैं, when we put a sign with this minor, तो ये जो पार्ट टोटल होता है, दिस इज कोफैक्टर ऑफ A21, है कि नहीं? सो प्लस A22. सो A22 का मीनिंग हो जाता है बेटा कि सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, ये चला गया. सो देन यू विल बी लेफ्ट अप विद A1, you will be left up with A11, A13, A31, A33. एंड क्योंकि 2 plus 2 is 4, सो प्लस 1 का ही साइन रहेगा यहाँ पे. दिस इज नॉट A21 प्लस, ये मल्टीप्लाई सिर्फ 1 से हो रहा है. हाँ, सो प्लस फिर A23, 2 plus 3 is 5 ऑड, तो माने A23 के साथ there will be a minus 1 का sign and then determinant of, so A23, that means second row and third column gone. So A11, A12, A31, A32.
ठीक है जी, इज इट मेकिंग सम सेंस टू ऑल ऑफ यू? कुछ समझ में आ रहा है आपको? सो वी हैव एक्सपैंडेड अलोंग दिस, तो इस चीज को हमने कोफैक्टर बोल दिया A21 का। सो A21 कोफैक्टर A21, A22 कोफैक्टर A22, A23 कोफैक्टर A23, जहां पे कोफैक्टर A21 इज नथिंग बट -1 इंटू determinant of this thing, which means A12 A33 plus A32 A13, ठीक है। एंड देन दिस कोफैक्टर एंड देन दिस। अच्छा, कोफैक्टर में देखो, अगर इफ आई ओपन दिस कोफैक्टर, अगर मैं इस कोफैक्टर को ओपन अप करती हूँ, सो आई विल गेट -A12 A33 -A32 A13, एंड देन ये कोफैक्टर इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद A21, है ना। कोफैक्टर ए फर्स्ट कोफैक्टर जो भी ये वैल्यू है, दिस इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद A21 ना। So basically what happens is when I open this cofactor, जब मैं इस cofactor को open up कर रही हूँ, I'm getting this. And I have to multiply it with A21. So I'll get minus A21 A12 A33 minus A21 A32 A13. अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट व्हेन आई ओपनड दिस वन, जब मैंने इसको ओपन अप किया, आई गॉट 2 एलिमेंट्स। सिमिलरली जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आई गेट 2 more. We'll solve this, we'll get 2 more. So we'll get 6 चीजों का sum of 6 things. Don't get worried by minus sign कि it's a difference. नहीं, we can always put a plus sign and then put this, put a plus sign and then put this. So it is a sum of 6 elements. And what is 3 factorial? 3 factorial is 3 into 2 into 1, which means 6. So are you understanding? Because ये एक 3 cross 3 matrix था, so number of elements that you will be having in the determinant is 3 factorial. That means 6 elements. जब हम ये determinant open up करते हैं, तो आप 6 चीजों का sum करोगे. You will be adding up 6 things together, right? So that is exactly what this is going ahead and saying. तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं. There is a question given in the this. So question says कि आपको determinant of A निकालना है. सॉरी, you're गिवन कि A एक मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ 3002 61C2 -1100 and 5203. The question is saying check that cofactor of element C is, so you have to check that the cofactor of element C is -1 to the power 5, 302 -110 523. You have to check this. ठीक है, तो अब देखो जरा ध्यान से. Cofactor of 2 3 means second row and third column. So you will eliminate second row and third column. So you will be left up with 302 -110 523. This is correct. And sign will be 2 plus 3, 5 is odd. So -1 to the power 5. Okay, so this is correct. The answer is yes. We have written the correct cofactor. Okay. Then let's see the next question. So I have taught you cofactor expansion. बस that's it. This section यही है और कुछ नहीं है. So you can do some questions from the back, जिसमें ऐसा कुछ बोला हुआ है कि find the determinant of 0 0 A 0 B 0 C 0 0. So you can expand around row 1, है ना. तो सीधा थर्ड एलिमेंट बचेगा. सो थर्ड एलिमेंट इज A13. इट्स अ पॉजिटिव एलिमेंट. माने इट्स अ सम इवन हो रहा है. 1 + 3 1 1 + 3 4 है, तो पावर विल बी 1. आई मीन 1 से मल्टीप्लाई होगा, -1 से मल्टीप्लाई नहीं होगा. सो वी कैन से दैट इट विल बी A13 इंटू कोफैक्टर ऑफ A13, क्योंकि पहले दो एलिमेंट्स तो 0 हैं. सो कोफैक्टर ऑफ A13 हो जाएगा A13
इंटू 1 to the power 4 जो इवन होगा इंटू, सो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम कौन, डिटर्मिनेंट ऑफ 0 C B 0, तो इट विल बी A13 इंटू 0 - BC, और A13 is nothing but A, so A into -BC, so -ABC. ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है. यू नोटिस दैट एक्चुअली व्हेन वी हैव अ मैट्रिक्स जहां पे सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स फिल्ड होते हैं एंड अदर्स आर जीरो, तो इसका डिटर्मिनेंट आ जाता है नेगेटिव ऑफ द प्रोडक्ट. और यही अगर सारे मेन डायगोनल एलिमेंट्स फिल्ड होते हैं एंड अदर वुड हैव बीन जीरो, तो इसका डिटर्मिनेंट वुड हैव बीन ABC. राइट, तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है विच यू कैन रिमेम्बर. ओके, थैंक यू.